Okay. Um, Hello and welcome everybody. Am I audible? I think I'm audible. Okay. So last time we left at Unit 3. Let's start from there. Okay, and I hope everybody did the Dogglers app from Unit 2. I hope all of you did that. I will be sharing the answer, like the answer code to the Dogglers app in today's message on Telegram and Discord. But I would, in case you haven't solved it, you should solve it on your own and then look for the answer key. In case you have solved it and you have doubts somewhere, then you should look for that. Uh, then you can see it in the home. All right. So, okay. Um, I did activities and intents with you, and test navigation was to do on your own. Now I'll be doing stages of the activity life cycle. Actually, no, I did stages of. Uh, can somebody remind me where I left yesterday? I think I covered the quiz also. Okay, no, I did not. No, I didn't cover the quiz. Okay. So we left somewhere in stages of the activity life cycle. Oh, okay. Okay, I remember. We left here. I did explore the life cycle methods and I had basic login. I covered this yesterday. Today we will be doing the rest of this unit, the rest of this pathway, and the next pathway as well. Okay. So to recap, here last we were logging a few messages on our log. Main activity is the tag with which we can search our log at. And then there are a few stages of the life cycle, like there is on create. On create is called only once, and during the entirety of the program, if you shut your program, then you open it again, then on create is started again. On create always comes with an on destroy, then on start comes with an on stop, and on resume comes with an on pause. With that, let's move on to explore lifecycle use cases. Okay, so हम डिजर्ट क्लिकर ऐप पे थे राइट वो भी खोल लेते हैं ओके और जब तक वो खुल रहा है सबसे बेसिक यूज केस सबसे फर्स्ट यूज केस वी आर डूइंग इज जब हमारा ऐप पहली बार खुलता है फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यू इनिशियलाइज द ऐप एंड यू आर ट्राइंग टू रन इट एंड देन जब ऐप पूरी तरह क्लोज जाता है यू नो इट्स नॉट जस्ट कि तुमने ऐप खोल के रखा है तुमने ऐप होम बटन दबा दिया तुम किसी और ऐप पे चले गए तुमने नोटिफिकेशन खोल ली ऊपर से तुम वापस उस ऐप पे आ गए नॉट दैट व्हेन यू क्लोज द ऐप डाउन कम्प्लीटली तुमने रिसेंट से भी हटा देते हो यू जस्ट यू नॉट यूजिंग द ऐप एनीमोर बैकग्राउंड में फोरग्राउंड में कहीं पे भी नहीं है वो सो पहले दो केसेस वो है starting your app for the first time and then closing the app down for the first time closing the app down completely अगर
मैंने इसमें लॉगिंग वाले मैसेजेस डाल दिए थे कल। ये जो मेरे ऑन रिज्यूम, ऑन स्टार्ट, ऑन क्रिएट, ऑल ऑफ दीज आर कॉल बैक मेथड्स एंड अच्छा ओके तो अभी खुल रहा है। I don't know what's the problem. It might have restarting, but then if I have to restart, तो मुझे live फिर से शुरू करनी पड़ेगी. So that's not helpful. ठीक है, जब तुम पहली बार अपना ऐप खोलते हो तो तुम्हारे पास 3 लॉग मैसेजेस आएंगे, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम। सो ये कॉल बैक मेथड तब आते हैं जब तुम्हारी एक्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्ट होती है। फिर हम कपकेक पे तुम उस ऐप पे काम कर रहे हो, ठीक है, यू आर एक्टिव ऑन दैट ऐप एंड देन सिंस अभी सिंगल स्क्रीन का ऐप है, तुम बैक बटन दबाओगे तो तुम अपने स्क्रीन पे आ जाओगे, बट यहाँ पे इसने कपकेक फ्यू टाइम्स टैप किया, उसके बाद तुम बैक करोगे तो मेरी लॉग में आएगा on pause, then on stop. So pause first, then you stop, and then you destroy the app. ठीक है। सो since I said कि ये सिंगल क्लिक ऐप, सिंगल स्क्रीन ऐप है, तो अगर हम बैक दबाते हैं तो मेरी एक्टिविटी इंटायरली क्लोज हो जाएगी। इट डजंट हैव मल्टीपल स्क्रीन्स टू गो बैक टू। एंड ऑन डिस्ट्रॉय का मतलब ये है कि एक्टिविटी फुल्ली शट डाउन है एंड नाउ द सिस्टम कैन यूज इट फॉर गार्बेज कलेक्टिंग। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है कि जब जो भी ऑब्जेक्ट्स तुम्हारी एंड्रॉइड स्टूडियो में देयर आर अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट, अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन योर ऐप, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स यू आर नो लॉन्गर यूजिंग, वो गार्बेज कलेक्शन इज गार्बेज कलेक्शन मीन्स कि जो भी ऐप दैट यू आर नॉट यूजिंग they are cleaned up and जब on destroy method कॉल होता है, it's an indication कि जितने भी रिसोर्सेज थे ऑब्जेक्ट्स एंड whatever resources the app was using, अब उनको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं एंड देन starts cleaning up that memory, जो भी मेमोरी उस ऐप ने ले रखी थी रनिंग ऐप में, doesn't completely erase out of the memory. हाँ, तो देयर इज अनदर केस जब मेरी एक्टिविटी कंप्लीटली शट डाउन हो सकती है अगर हमारा कोड मैनुअली, अगर हम कोड में मैनुअली डाल दे एक्टिविटीज फिनिश मेथड, ठीक है, फिनिश मेथड में वो फोर्स क्लोज आता है एंड दिस हैपन, जैसे आई सेड कि तुम रीसेंट्स में जाके अगर तुम क्लियर ऑल ऐप कर दो या फिर सर्टेन ऐप को उठा दो, दैट्स फोर्स क्विटिंग। द ऐप वाज रनिंग, इट वाज इन द रीसेंट्स, उसमें कुछ प्रोसेस चल रहा था, यू हैवंट कंप्लीटली शट इट डाउन, तुमने बस मिड प्रोसेस उसको हटा दिया अपने रीसेंट से, तो दैट्स फोर्स क्विट। एंड सो
अनदर थिंग इज एंड्रॉइड को यही पता होता है कि अगर तुमने नोटिस किया होगा तुम्हारा ऐप तुम बहुत टाइम से नहीं यूज कर रहे, so you're using Facebook and then you are playing a game. तो तुम गेम खेल रहे हो एंड देन यू ओपन योर फेसबुक एंड देन यू गेट स्टक देयर सो फॉर लाइक 10 to 15 minutes. देन यू ट्राई टू रिज्यूम बैक रीसेंट्स पे जाके, देन यू ट्राई टू ओपन द गेम अगेन. तो तुम्हारी गेम अपने लोगो से फिर से शुरू से आएगी, नॉट वेरी लेफ्ट डाउन. तो अगर कोई ऐप ऑन स्क्रीन नहीं होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन ऑल्सो द एक्टिविटी कंप्लीटली शट्स डाउन. दिस इज डन बेसिकली हमारी बैटरी प्रिजर्व हो जाए और जो भी रिसोर्सेज ऐप ने ले रखे थे वो अदर ऐप्स यूज कर सके जो तुम करंटली यूज कर रहे हो, जो करंटली तुम्हारी रिसेंट में है. अच्छा, अब इसने क्या किया, इसने ओपन किया एंड देन इसने बैक नहीं किया, इसने होम स्क्रीन दबा दी एंड देन अभी इसके रिसेंट में, ठीक है, सो द लास्ट बटन ऑन योर फोन, जो भी तुम्हारा फोन है, यू कैन सी इट इन द रिसेंट एप्स. अगर तुम वहां से रिटर्न करो, अब तुम रिसेंट्स पे जाके फिर से खोलो, तो लॉक का दिखाएगा ऑन डिस्ट्रॉय, देन इट्स क्रिएटेड अगेन. सो इट्स डिस्ट्रॉयड, क्रिएटेड, क्रिएट के साथ स्टार्ट एंड रिज्यूम आएगा. पिछले ऐप में, पिछले स्टेप में अभी हमने ऊपर किया, हमने बैक किया था, एक्टिविटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, राइट. तो अगर हम ऐप को वापस, अगर हम ऐप पे वापस रिटर्न करते हैं अब, तो एंड्रॉयड पूरी तरह से उस एक्टिविटी को फिर से खोलता है. सो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम मेथड्स आर कॉल्ड. और जो पुराने लॉग्स थे, none of them will be maintained. ये देखो, on create and on destroy, like I said, they're only called once during entire uh, lifetime of a single activity instance. ऐसा नहीं कि तुमने एक बार इंस्टॉल कर लिया तो एक ही बार ऑन क्रिएट कॉल हो सकता है, इस इंस्टेंस में एक ही बार कॉल हो सकता है. Second case is कि you are navigating away and back from the activity. Like I said, तुम game खेल रहे हो, then you're scrolling back to the game. So uh, completely में तो you've seen on create and on destroy. Now जब तुम away and back करते हो, you will be using something like on resume, and on resume comes with an on pause, and there will be on start and on stop. हाँ, तो जब भी तुम बस जैसे 2 सेकंड के लिए अपनी एक्टिविटी को साइड करते हो टू ओपन अनदर ऐप, तो वो पूरी तरह क्लोज नहीं होती है, बट इट्स जस्ट नो लॉन्गर विजिबल ऑन द स्क्रीन. तो अगर वो स्क्रीन पे विजिबल नहीं है बिकॉज सिंस कोई और ऐप विजिबल है या कोई और स्क्रीन विजिबल है, देन इट्स कॉल्ड पुटिंग योर एक्टिविटी इन द बैकग्राउंड. और अगर तुम्हारे फ्रंट पे दिख रही है, देन इट्स कॉल्ड फोरग्राउंड और ऑन स्क्रीन. और जब तुम्हारा यूजर रिटर्न करता है एक्टिविटी से, देन ऑब्वियसली इट बिकम्स विजिबल अगेन. तो ये सारे पार्ट, इट्स कॉल्ड एप्स विजिबल लाइफ साइकिल, whether it's visible on the screen or not, whether it's foreground or in the background. अगर तुम्हारा ऐप बैकग्राउंड में होता है, देन इट शुड नॉट बी एक्टिवली रनिंग. उसमें कुछ प्रोसेसेस नहीं चल रहे होने चाहिए ताकि तुम्हारे सिस्टम के रिसोर्सेज और बैटरी लाइफ बचे रहे. तो ये जो एक्टिविटी के लाइफ साइकिल है एंड इसके जो कॉल बैक मेथड है, वी यूज ऑल ऑफ देम टू नो कि कब हमारे ऐप बैकग्राउंड में जा रहे हैं, ताकि हम कोई भी ऑनगोइंग ऑपरेशन जो चल रहा होगा उसमें, उसको हम स्टॉप कर दें और फिर उसको बैकग्राउंड में जाने दें. So this is what happens when activity goes into when it goes into foreground and then background, then it returns back to the foreground. तो जब ये background में गया, there is on pause and there is also an on stop. ठीक है. Why? There is a difference between on pause and on stop. वो अभी नीचे आएगा. Say इसमें क्या करें, इसने ऐप खोला हुआ है, then press the home button and Android Studio में जाके you can see the log cat कि पहले on pause मेथड आया, then on stop मेथड आया, but on destroy नहीं हुआ है क्योंकि मेरा ऐप अभी क्विट नहीं हुआ है, ना ही फोर्स क्विट हुआ है, ना ही मैंने इसे उड़ाया है, ना ही मैंने इसे पूरी तरह शट डाउन किया है. तो ऐप इज स्टिल रनिंग, इट्स जस्ट पॉज एंड स्टॉप. तो ओके, जब पॉज होता है
देन मेरे ऐप के पास इट्स नो लॉन्गर फोकस. ऑन पॉज और ऑन स्टॉप में मेजर डिफरेंस यही है कि on pause it no longer has focus and on stop it's no longer visible on the screen. You might think ये दोनों सेम ही तो बात है, फोकस नहीं है और स्क्रीन पे विजिबल नहीं है, essentially सेम ही तो है, but they're not the same. uh, we'll see that here. uh, but, हाँ. So although अभी currently मेरी activity pause हो चुकी है, but वो अभी memory में है, right? I'm not destroyed it, I'm not closed the app. तो activity का जो object है, it's still in the memory, it's in the background. So since you might return to the app, अगर force quit नहीं हुआ है, like it has not been 20-30 minutes depending on your phone, then the phone thinks that the user might want to return to the app. तो उसके जो भी resources हैं वो active, like it retains those resources. It doesn't discard the resources. It doesn't send it for garbage collection. अब तुम अगर वापस खोलते हो अपने रीसेंट में जाके, then you see an on restart and then on start and on resume. So जैसे on pause था, on pause में app no longer has focus. On stop it's no longer visible on the screen. तो पहले on start आया, start मतलब अब वो स्क्रीन पे विजिबल है. then on pause का on resume आया कि अब मेरे उस पे फोकस भी है completely. जब मेरी on create is not called again because I told you on create एक ही बार उस ऐप की इनिशियलाइजेशन पे होता है. So on create नहीं होता है, on restart मेथड कॉल होता है इंस्टेड. एंड इस टाइम जैसे पिछली बार में यू विल नोटिस कि जब तुमने कपकेक्स टैप किया था, so जो भी तुम्हारी स्क्रीन पे था, कपकेक्स की वैल्यू अपडेट हुई थी, टोटल अमाउंट की वैल्यू अपडेट हुई थी, वो सारी वापस खोलने पे डिस्ट्रॉय हो गई थी, राइट? यू स्टार्टेड विद डिफॉल्ट वैल्यू 0 0. इस केस में तुम्हारे डेजर्ट सोल्ड और जो भी अमाउंट होगा वो चेंज नहीं होगा. हाँ. ऑल्सो अभी करंटली मेरे ओवरराइड ये ऑन रिस्टार्ट, ऑन क्रिएट, ये सारे मेथड्स बाय डिफॉल्ट काम कर रहे हैं, राइट? दे डोंट हैव एनी इम्प्लीमेंटेशन इन देम. से यू वांट देम टू डू सम वर्क हियर. से एकदम चाहते हो कि जब भी रीस्टार्ट हो तब एक मैसेज आए, या जब भी रीस्टार्ट हो तो कुछ हो, व्हाटएवर यू वांट, तो हम उनको ओवरराइड कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हेन यू वांट टू पार्शियली हाइड. सॉरी, यहाँ पे कुछ सेट ऑन क्रिएट और ऑन रिस्टार्ट में यही फर्क है. ऑन क्रिएट बस एक बार इनिशियली कॉल होता है, ऑन रिस्टार्ट बार बार तब कॉल होता है जब ऐप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, बस रीओपन हो गया. दैट्स ऑन रिस्टार्ट. ऑन रिस्टार्ट मल्टीपल टाइम्स खोल सकता है, ऑन क्रिएट एक ही बार खुलेगा. Okay, so now partially hiding the activity. Like I said, on stop and on resume में there is a huge difference. What's the difference? कि अगर सपोज करो कि तुम्हारे पास ये ऐप है, तुमने ऊपर से अगर नोटिफिकेशन खोलते हो, ये नोटिफिकेशन बार, तो तुम्हारे पीछे का ऐप, इफ यू नोटिस इन सम ऐप्स, वो ग्रे हो जाता है, राइट? और से तुम यहाँ पे शेयर पे गए, लाइक इफ यू ट्राई टू डू द शेयर थिंग, तो ये आ जाता है एंड देन पीछे का ऐप ग्रे हो जाता है. इट्स नॉट कम्प्लीटली हिडन बट इट्स नॉट एक्टिव. मतलब अगर तुम इस वाइट स्क्रीन के अलावा इस ऐप पे क्लिक करोगे तो ये वाइट स्क्रीन बंद हो जाएगी, राइट? तो ये वाला पार्ट एक्टिव नहीं है, लेकिन ये इनविजिबल नहीं है, इट्स स्टिल विजिबल टू मी. सो जब अभी हमने ऑन स्टार्ट किया तो ऐप वापस विजिबल हो गया, और जब ऐप को रिज्यूम करने के लिए ऑन रिज्यूम किया तो ऐप ने वापस फोकस गेन कर लिया. ठीक है. The difference between focus and visibility is I explain. हाँ, इस वाले केस में ऑन पॉज इज कॉल्ड, नॉट ऑन स्टॉप. पीछे हम देख रहे थे कि ऑन पॉज भी होता है, ऑन स्टॉप भी होता है. इस केस में यहाँ पे शेयर कर रहा है,
यहाँ पे सिर्फ ऑन पॉज कॉल हो रहा है क्योंकि एक्टिविटी इज स्टिल पार्शियली विजिबल हियर, राइट? इट जस्ट डज नॉट हैव द यूजर फोकस. तो इस केस में you will call on pause and on resume. एंड हाँ, द इंटरप्शन विद ऑन पॉज यूजुअली लास्ट अ शॉर्टर टाइम. जैसे कि अगर ऐप माई स्क्रीन पे विजिबल नहीं है, सो इट टेक्स लाइक 10 minutes, राइट? अगेन डिपेंडिंग ऑन योर फोन. और अगर तुम ये वाली चीज कर रहे हो, कुछ ऐप में नोटिस किया होगा, तुम अगर तुम शेयर वाली चीज कर रहे हो, अगर तुम कुछ भी बटन नहीं दबा, तुमने शेयर का ऑप्शन खोला, नीचे ये स्क्रीन अपने आप बंद हो जाती है एंड यू गेट बैक टू दिस, राइट? ये कुछ ऐप्स में होता है, कुछ ऐप्स में नहीं होता है. सो बेसिकली इट मीन्स कि ऑन पॉज जो है वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है एंड देन इट कम बैक टू योर एक्टिविटी. एंड ऑन stop takes longer time, so you can hold your app for a longer time with the on stop callback method. Okay, so on pause में also जो भी चीजें डिस्प्ले हो रही है, they they block other things in the app from displaying. So you need to make sure कि on pause में जो भी कोड हो, it's very lightweight. For example, अगर तुम्हें phone call आ रहा है within you're on an app and then you get a phone call, then on pause का कोड बस ये होना चाहिए कि it may delay the incoming call notification. That's it. उस तरह heavy कोड नहीं रखना है on pause में. Okay. Now, what we're doing here is we're rotating the phone in the emulator. I will not be opening emulator. तो मैं इसमें समझा रही हूँ. What's the configuration change? Configuration change तब होता है जब हमारे डिवाइस का स्टेट इतना radically change हो जाता है. It changes so abruptly that system gets confused कि वो immediately क्या करे. So to get out of it, वो अब तुम्हारे ऐप को force close कर देता है, ठीक है? And then उस जो भी तुमने change करा है, it rebuilds the activity and then it presents it to you. ये बहुत बार if you sometimes you must notice कि तुम्हारा फोन, अगर तुम किसी भी ऐप को नॉर्मल में चला रहे हो, मोस्टली अब ऐप्स के साथ नहीं होता है, बट इट्स एन एग्जांपल. अगर तुम किसी भी ऐप को चला रहे हो इन पोर्ट्रेट मोड एंड देन सडनली यू पुट इट इन लैंडस्केप मोड, तो ऐप फोर्स शट डाउन हो जाता है, राइट? इट सेज सिस्टम यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग और समथिंग एंड इट फोर्स क्लोज दैट. क्योंकि इतना रेडिकली मैंने चेंज किया, इट लाइक द सिस्टम डिडंट हैव प्रायर नोटिस, राइट? तुमने एकदम से चेंज किया उसका रोटेशन एंड दैट्स नॉट इनफ टाइम फॉर द सिस्टम टू रीबिल्ड. सो इफ द यूजर चेंजेस द डिवाइस, अच्छा ऑल्सो इफ ये भी हो सकता है कि तुम अभी अपने पूरे ऐप को इंग्लिश में लिख रहे हो, सडनली तो अपने फोन में जाओ एंड देन अपनी ऐप लैंग्वेजेस, मतलब लैंग्वेजेस में कर दो कि अरेबिक, ठीक है, अरबिक, सॉरी, और उर्दू और एनीथिंग. सो अगर यू नो कि इंग्लिश और बाकी लैंग्वेजेस में the the fonts and the length are not same. So if I write wait in English, वो उतना ही जगह नहीं, ये जरूरी नहीं कि उतना ही जगह ले in some other language, and there are like hundreds of languages in the world, right? So it's not easy to determine कि जैसे एक word है, उस word में इस language में इतना space लेगा. That's not possible. बस ये कि तुम्हारे यूजर चेंज कर रहा है लैंग्वेज, तो तुम्हारे ये जो तुम्हारा ऐप है, इसमें तो इमेज ज्यादा है, बट तो जिसमें टेक्स्ट ज्यादा होगा या जिसमें यूआई ज्यादा होगा, उस पूरे ऐप को इट हैज टू रिकॉन्फ़िगर, क्योंकि डेजर्ट लिखकर अब इतना सही जगह नहीं लेगा. इट विल टेक मच मोर स्पेस, इट विल लुक डिफरेंटली, तुम्हारा लेआउट कंप्लीटली बदल जाएगा, राइट? ऐसा हो सकता है कि डेजर्ट ऊपर आए, क्लिकर नीचे आए. सो in case that happens, तब भी हमारा ऐप completely बंद हो जाता है. So if the user changes the device language, the whole layout might need to change to accommodate different text directions and string lengths. Say another example is कि यहाँ पे इसने किया है कि user plugs the device into a dock, or you add a physical keyboard. तब भी your app might layout might need to change, right?
or if the device orientation changes, portrait and landscape. ठीक है. Now one thing you can experience on device rotation is data loss. अगर हम अपने ऐप को suddenly change कर देते हैं from portrait to landscape, you might experience some data loss. Attendance link will be given in a few minutes. Wait patiently for that. All right. Now let's say rotate the device, and then हम emulator में सारी options होते हैं side में, right, left and right की. तो ये options use करके you can rotate the orientation, or you can even use arrow keys. Control and arrow keys. तुम्हारे logcat कुछ ऐसा दिखेगा. It's created, then started, then it's resumed. It's visible, now it has focus. Then suddenly it's paused because it no longer has focus. Because तुम orientation change कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, so it no longer has focus. And it stopped because it's no longer visible on your screen and it's destroyed. It feels for shutting the app. Then it's created again, and then it started. Okay. And also जब तुम्हारा device rotate होता है तो activity completely shut down हो गई यहाँ पे, right? It's created again, then it's created again. तो जो भी values थी वो सारी उठ गई, now it's with default values. सब 0 0 हो गया. अच्छा ये वाली चीज तो save instance state, ये हम सबने बहुत देखी है कोड में, अपने कोड्स में. ये दिखता है ना तुम्हें हर कोड में. you can see this on create save instance state, saved instance state. अब ये क्या है? Saved instance state is also a callback method. And you use this to save any data that your app might need if the activity is destroyed. माने अगर मेरे पास ये तो ऐप बहुत ही सिंपल है, से किसी बड़े डेवलपर का बहुत बड़ा ऐप है and then it's risky that उसका कोई डेटा लॉस दे, जहाँ पे you can just tap again and then find number again. But अगर कोई बड़ा ऐप है, so you can't just say कि तुमने orientation change करी and you just lost the data. It's not feasible, right? तो उस केस में this callback method comes to help. Save instance state में जो भी data your app thinks that the user might need when the activity is destroyed, वो इससे हम save कर सकते हैं. See here, create method में यहाँ जाता है ना, ये create, you can see the save instance state. तो create में ही आ जाता है on restart and save instance state before it gets started. So it can also be called या तो ये create के बाद start कर सकता है. It can also be called when the activity has been stopped. ठीक है. It is called after the activity has been stopped, and every time your app goes into the background, then also it's called. Okay. It's like a safety measure. ठीक है. मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत बड़ा chunk save कर सकते हो तुम. It's just it gives you a chance to save like a small amount of data to something called a bundle. तो जिस चीज में डेटा सेव हो रहा है बंडल हम आगे पढ़ेंगे. It's called a bundle. जिसमें activity foreground से हट रही है, is going back into the background or is being destroyed or whatever. So that small amount of information can be stored in your bundle. And this is because okay, so take this example. जब तुम Microsoft Word में काम करते हो, तो every time you write something, you open the app and then you write something, and then you close, तो फिर एक warning आती है, you want to save it or not, right? तो सोचो अगर हमारे पास ये ना आए, सोचो कि तुम एक हर बार लिख रहे हो and there's no option of saving it, there's no warning. हर बार तुम हर दिन उस word document पे काम करते हो, and then suddenly on the day you want to submit that word document, तुम्हारी light चली जाती है, right? Or say your document is not opening, your document is corrupted.
तो एट दैट, और उस दिन तुमने कुछ कुछ लिखा है, सो व्हाट्स अ बेटर सोल्यूशन कि तुम्हारे पास उस दिन जो तुमने लिखा है वो डेटा ना रहे, या फिर तुम्हारे पास इतने दिन से जो भी तुम उस वर्ड पे काम कर रहे हो वो सारे ही ना रहे. दैट्स नॉट आइडियल, राइट? तो इसमें that's what it does. It saves this data now, because अगर ये वेट करेगा जब तक तुम्हारी एक्टिविटी शट डाउन हो रही है, तो हो सकता है कि द सिस्टम माइट बी अंडर रिसोर्स प्रेशर. मतलब उससे बहुत सारी चीज जब तुम बंद कर रहे हो, तो उसे सिर्फ तुम्हारे डेटा नहीं सेव करना, उसे बहुत सारी चीजें बंद करनी है, द यूआई, द रिसोर्सेज, एंड it has to फ्री अप द रिसोर्सेज, ताकि रिसोर्सेज किसी और ऐप में यूज हो जाए, वो रीएलोकेट हो जाए. तो बहुत सारी चीजें करनी है. तो सिस्टम कैन बी अंडर लॉट ऑफ रिसोर्स प्रेशर, एंड इन दैट केस अगर वो वेट करे कि जब मेरा ऐप शट डाउन हो रहा है एग्जैक्टली तब मैं अपना डेटा सेव करूंगा, देयर इज अ हाई चांस मेरा डेटा सेव ना हो. इसलिए हम सेव इंस्टेंस डेट क्रिएशन में ही डाल देते हैं. एंड every time you close it, every time it goes into the background, तब डेटा सेव होता रहता है. Saving the data ensures that the updated data in the bundle is available to store if it is needed. Max to max तुम्हारा लास्ट अवेलेबल डेटा थोड़ा सा नहीं रहेगा. That doesn't happen, but worst case scenario would be that. Okay, अब हम override करें यहाँ पे अपना function save distance state. Like I said, it's a callback method, and if you wanted to perform a certain function, ठीक है, यहाँ पे इसको log करना है, तो इसने we can override a callback method. So override function on saved instance state. Out state is saved in bundle, and then क्योंकि it's coming from super class, we need to do super dot on save instance. सारे लॉग स्टेटमेंट टैग यहाँ पे मेन एक्टिविटी है, टैग ऊपर डिफाइन हो गया था ऑन सेव इंस्टेंस कॉल्ड. अगर तुम ओके, सो अब तुम अपने ऐप को चलाओ, देन यू क्लिक द होम बटन, तो ऐप में बैकग्राउंड में चला गया, तुम्हारे इसमें आएगा ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, एंड देन ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट कॉल्ड. ओके ओके, नाउ हम अपनी फाइल के सबसे ऊपर दो कांस्टेंट डाल रहे हैं, की रेवेन्यू एंड देन की डेजर्ट सोल. ठीक है. तो सिंस ये कांस्टेंट है, मुझे बार बार ये रेवेन्यू की और डिजर्ट सोल्ड की जो भी वैल्यू जा रही है, मुझे बार बार नीचे नहीं करनी पड़ी. आई कैन जस्ट यूज दीज कांस्टेंट्स एंड आई कैन यूज देम थ्रू आउट different activities and packages, सिर्फ इसमें नहीं. So it's helpful to initialize constants. Then हाँ ठीक है, तो ऑन दिस ऑन सेव्ड इंस्टेंस, इसमें पैरामीटर जा रहे हैं बंडल ऑफ टाइप आउट स्टेट, राइट? तो आउट स्टेट पैरामीटर, सॉरी, आउट स्टेट पैरामीटर which is of type bundle. I said reverse, sorry. बंडल क्या होता है? यहाँ पे ऐसा है कि बंडल नीचे बनेंगे. बंडल इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, जहाँ पे जो कीज हैं दे विल ऑलवेज बी स्ट्रिंग्स. हम इसमें सिंपल डेटा डाल सकते हैं, जैसे कि इन डाल सकते हैं, बूलियन डाल सकते हैं. एंड क्योंकि हमारे सिस्टम को पता है कि बंडल को मेमोरी में रखना है, it's a better practice कि हम बंडल को स्मॉल रखें. We don't store huge amounts of data in it. We need to keep the data in bundle very small since it's going to be kept in the memory. And इसमें only string type का, the keys are always of type string. You need to remember that. And also size of the bundle automatically memory restrict कर देती है. It's limited, and लेकिन ये हर फोन से वेरी करता है. It varies from device to device, right? So for your own device, if you store too much data, depends on whatever storage it has, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा app crash हो जाए with something called transaction too large exception error. Okay. So now we're putting revenue value and integer into the bundle with the put int methods. Put int is used for putting this value. So I said key string हो सकता है, value कुछ भी हो सकता है, int या boolean, right? So value is integer, and we're putting it into the bundle. It takes so put in method, it takes two parameters, a string for the key, which is key revenue, जो constant था मेरा ऊपर, and then the actual value that you want to save, which is revenue. Same thing we do with this key desert sold and desert sold.
ओके, तो लाइक आई सेड कि अभी जो भी एक्टिविटी का स्टेट है उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं. So, हम डेटा सेव कर सकते हैं विद ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट, राइट? समथिंग लाइक ऑन सेव्ड इंस्टेंस स्टेट. आई वांट टू रिस्टोर द डेटा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो रिस्टोर के लिए भी वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड ऑन रिस्टोर इंस्टेंस स्टेट, एंड वी कैन आल्सो यूज ऑन क्रिएट बंडल. ठीक है. ये जो बंडल है इसमें डेटा कहाँ से आया? ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट मेथड से. ठीक है. हम क्या पैरामीटर पास करवाएंगे क्योंकि डेटा मुझे यहाँ से मिल रहा है. ऑन सेव्ड इंस्टेंस डेट ऑफ द टाइप बंडल, इसको हम पास करवा रहे हैं. हम फंक्शन ऑन क्रिएट में भी कर सकते हैं. फंक्शन ऑन क्रिएट ऑन सेव्ड इंस्टेंस बंडल. ऑन क्रिएट, यहाँ पे यू कैन सी ऑन क्रिएट गेट्स अ बंडल. हर बार हर कोड में यू कैन सी दिस बंडल, राइट? तो हर बार एंड ऑन क्रिएट इज कॉल्ड इट गेट्स अ बंडल. ठीक है. जब भी हमारी एक्टिविटी रीस्टार्ट होती है due to whatever shutting down that it occurred, तो जो भी बंडल हमने सेव किया है इट्स पास्ड इनटू दिस ऑन क्रिएट मेथड. और से हमारी एक्टिविटी कंप्लीटली फ्रेश स्टार्ट हो रही है. ये क्वेश्चन मार्क वी स्टडीड बिफोर इज फॉर नल सेफ्टी, राइट? तो ये ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी एक्टिविटी is shut down because of some reasons, recents or whatever, it's shut down. So in that case, bundle में data हो सकता है, and then whatever data is stored, it's passed into the on create. Now, what if your activity was starting fresh? तुम्हारे पहली बार on create call हो रहा है, तो उसमें कुछ data है ही नहीं previously. तो ये तो bundle तो null हो गया. So it's just this question mark is just to see if it's restarting or if it's creating again. It's restarting again or if it's creating. तो अगर bundle null नहीं है, then you know कि हम उस okay, so if saved instance state is not equal to null, I want my revenue. इसमें हम बाइंडिंग वेरिएबल सेट कर रहे हैं. ये टेस्ट बेसिकली नल के लिए है टू डिटरमिन कि हमारे ये टू डिटरमिन कि हमारे बंडल में डेटा है कि नहीं, और which basically tells you कि नया स्टार्ट हो रहा है या फिर इट्स रीस्टार्टिंग. ये जो की रेवेन्यू है एज यू कैन सी ऊपर हमने कांस्टेंट से यूज करी है, right? And this that constant we put in something called put int. This हमने ऊपर एक put int किया था. Now we are seeing get int. Get int क्या है? Get int होता है we use it to get data out of the bundle. जैसे put int में हमने डेटा बंडल में डाला, get int we take it out of the bundle. Get int में क्या पैरामीटर पास हो रहे हैं? We are taking a string which acts as a key. यहाँ पे इस केस में की रेवेन्यू and a default value in case no value exists for that key in the bundle. अगर तो वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी बंडल के लिए तो वो इसकी जगह हो जाएगी, और अगर नहीं करती है तो बाय डिफॉल्ट वी पासिंग इन 0, व्हिच इज पासिंग डिफॉल्ट वैल्यू हियर. जो भी इंटीजर हमें बंडल से मिलता है वी आर असाइनिंग टू दिस रेवेन्यू वेरिएबल हियर. सेव इंस्टेंस स्टेट इज बेसिकली बंडल. Okay. Okay, and we are also using get in method for the key of desert sold. अभी हमने किसे दिया था key revenue के लिए key desert sold. Okay, तो अब इसने क्या किया? अभी मेरा ऐप सीधा था, मैंने इसको सडनली इससे रोटेट किया तो मेरे ऐप का एक डिस्प्ले करेगा रेवेन्यू एंड desert sold. लेकिन ये ऐप क्या कर रहा है कि जितनी बार क्लिक करोगे, तुम्हारे पास 6 कपकेक प्रोडक्शन में 6 कपकेक के 5 डोनट है एंड 6 केक्स है. ठीक है. तो जब मेरे कपकेक्स रन आउट हो जाते हैं देन इट कम्स टू डोनट्स, एंड देन जब डोनट्स खत्म हो जाते हैं देन कम्स टू केक्स, राइट? तो अभी इसने क्या किया? अभी इसने ये चीज सही कर दी कि डेजर्ट सोल्ड मैंने 6 बार टैप किया था एंड देन मैं इसको लैंडस्केप में शिफ्ट कर दिया, तो ये चीज तो सही कर दी कि 6 कर दिया एंड देन अमाउंट भी सही कर दिया. लेकिन इस पॉइंट में मेरे पास डोनट आना चाहिए ना, तब 5 कपकेक तो खत्म हो चुके हैं.
तो अब तो बस डोनट दिखाना चाहिए, सिंस क्लियरली इट सेज 6 डेजर्ट सोल्ड, लेकिन कब फोटो यहाँ पे कपकेक की आ रही है, तो दिस इज स्टिल एन एरर व्हेन चेंजिंग इट टू लैंडस्केप. ये क्यों हो रहा है? वी नीड टू डू वन मोर थिंग टू इंश्योर कि मेरा ऐप वैसे ही रिटर्न हो फ्रॉम द शटडाउन स्टेट जैसे कि वो छोड़ा था. हाउ डू यू डू दैट फॉर दिस पर्टिकुलर ऐप? हम कर रहे हैं फॉर, ये हमारे पास पहले कोड है. For dessert, in all desserts, if dessert sold is greater than equal to dessert की start production amount से 5 or 6 जितना भी है cupcake या donut, new dessert is equal to dessert. मतलब ये dessert, ये loop सारे desserts के लिए run कर रहा है, total production list में जितने भी हैं, and then ये कर रहा है, ये compare कर रहा है कि अगर जैसे donut खत्म हो चुका है या cupcake खत्म हो चुका है, तो हमें dessert को new dessert assign कर रही हूँ. मतलब कि अगर cupcake खत्म हो गया तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरी picture donut की दिखे. So this method is relying on the what number of desserts are sold. अगर 5 खत्म हो चुके हैं, if it says 5 desserts are sold and you only have 4 cupcakes, right? Then obviously you need to show a donut now. So it's relying on what number of desserts are sold. Choose the right image. So um, we don't need to do anything in the saved instance state क्योंकि हम already, if you remember, const store कर रहे हैं for number of desserts sold, right? तो हम बस यहाँ पे एक लाइन ऐड करते हैं, show current dessert. तो ये it restores the state from the bundle. Okay, let's take the quiz and we're done with this part, right? I'll give you 10 seconds to see this question. Okay, so let's go. Which of the following is false about collections and higher order functions in Kotlin? Yes, maps and sets can all use higher order functions. No, these are unordered while maps and sets are ordered data types. Yes, like the elements in a set, the keys in a map must be unique. However, multiple keys can map to the same value. No, a key cannot map. Uh, a key can map to wait. Multiple keys can map to no. Multiple keys cannot map to the same value. There can only be one key, and that can only map to one value. Higher order functions such as map and filter can take lambda functions as parameters. Map and filter are not higher order functions, they are lambdas. Given the following code, what is the result of one word cities? So we'll list out Jeddah, Bangalore, okay. Val one word cities is cities dot to set, okay. Okay, converting it to a set, then you are converting it to a list. By set, what it means is ki whatever, if there are any repetitions, we are asking it to remove that by set. So Jeddah, Bengaluru, Bengaluru is twice. Okay, so Bengaluru would come only once. That item is out. Then we're setting it to a list. Uh, that's okay.
List can have any items in any order. Then you're filtering it so that it contains space. That would be Abu Dhabi. Abu Dhabi is space, and then it's also in sorted. So filter out. Okay, filter out whatever has space. That would be Abu Dhabi and Mountain View, right? Yeah, that would be these two. And then it's asking you to sort them also. So we sort it. What comes first? Abu Dhabi comes first, then comes Mountain View. You're asking for one word cities. Uh, one. Hmm, I think the answer should. Sorry, wait. That's not. It's not. The answer is not available. So we'll come back to this. I'm a little doubtful about this question. A dash is a piece of data passed between activities and launching an intent. That's extra. An extra is a piece of data passed between activities when you're launching an intent. You open an app and leave the app using the back button. In which order the following lifecycle methods called? Okay, so you're opening it and then you're leaving the app. All right. First would be on create, then it starts, then it stops, and then it's destroyed. Right? There's no pause and resume in this because there's information about that. And pretty obviously, it has to start with on create anyway. Which activity lifecycle method would be called if a dialog appears on screen, partially obscuring an activity? That would be on pause because the activity is still displayed, but it no longer has focus. So on pause is when it no longer has focus, and on stop is when it's no longer visible on the screen, right? Which of the following is true about life cycle of a single activity? On start can be called multiple times, while on create can be called only once. Yes. On stop can be called multiple times, while on pause can be called only once. There's nothing like on pause can be called only once. On destroy is called when the app enters the background. No, that's on stop. On resume is called when the activity gains focus. Yes, that that's correct. Which of the following is false about intents? Both implicit and explicit intents allow your app to launch another activity. Yes, they do. Explicit intents require you to specify the class of the activity you want to show. Yes. Otherwise, it would be implicit. Intents are performed using start activity method. Yes. An implicit intent always results in the system asking the user which app to open. That's false because implicit intent doesn't mean that you have to open another app. It's not always just that. The part that's correct is it's asking the system. It's requesting the system to do something, and it doesn't specify how to do it. It doesn't specify a destination or yes, how to do it. So it's a very specific case. The user which app to open. No. An activity contains the following code non-create. What will happen if this code is executed if the intent property is null? So intent dot extras question mark. So if the intent is null, it won't get to extra. Uh, yes, it won't get to extra, but there is no question mark after intent, which means had there been a question mark, intent question mark, extras question mark, then it wouldn't get to extra because intent would be null. However, we're specifying intent dot. So we're saying that intent is not null and you should go to extras. However, my intent is null. So this app will crash. Which of the following tasks can be performed in onCreate? Configuring, configuring views such as setting the layout manager of a recycled view. Yes, we do that. Determining the items to be shown in the options menu. It's not specifically on create.
Setting the on-click listener for items in the options menu. No. Getting extras from the intent that launched the activity. Yes. In which method should you handle what happens when a button in the app bar is pressed? When a button in your app bar is pressed. So that would be on options, item selected. So this is wrong. This one is wrong. Okay, let's see. List of Jeddah, Bengaluru, Shenzhen. Firstly, we're asking it to convert into a set. So twice Bengaluru is removed and twice Tripoli is also removed. It's just one Bengaluru and one Tripoli. Okay. Whichever it had first. So Jeddah, Bengaluru, Shenzhen, Abu Dhabi, Mountain View, Tripoli. Then Bengaluru is out. Lima, Mandalay. Okay. Then it's asking you to convert into a list. Set into a list. It would remain the same. And then it's asking you to filter out those that contains. Oh, I didn't see exclamation. I'm sorry. Uh, should not contain space. So Abu Dhabi and Mountain View are out. Sorry. And then it's asking you to sort it. All right. So you got. All right. So it would be Bengaluru, then Jeddah, then Bengaluru, Jeddah, then Lima, and then Lima, Mandalay, then Shenzhen, then Shenzhen, then Tripoli, right? So one is, if you remember, it starts with 0. So 0 is Bengaluru, 1 would be Jeddah. That's the correct option. Oh, it's not. Okay, so Jeddah is the correct option. It's not letting me do it. I'm not signed in anyway. This should be a correct option. Okay, so we are done with this pathway. Let's do this one. So you learn Android Jetpack in this. It's one of the things that you have to incorporate in your app. I hope all of you are working on your app. It's a very good chance to get it featured by Google itself. And you also have your team leads assigned to you, right? So whatever ideas you come up with should have uh, discussions with your team lead and give them your ideas, talk to them about it, tell them till where you've reached about the app in case you start making something. And they'll be able to help you also. So navigating around an app, yes, so they'll all from one screen to another, is an absolutely fundamental part of Android development. Historically, you do this using a tensor. Yeah, so they'll also be able to help you. So to approach them, I would say. Private transactions, which in simple cases like navigating around an app, by which I mean moving from one screen to another, is an absolutely fundamental part of Android development. Historically, you do this using a tensor private transaction, which in simple cases, like clicking a button, was easy enough. But what if we wanted to do something just slightly more complex? For example, hooking up a common pattern like bottom navigation. You need to make sure that not only
Thanks for the Okay, so you will get the attendance link in 2 to 3 minutes. Okay. navigating around the map, by which I mean moving from one screen to another, is an absolutely fundamental part of the Android development. Historically, we did this using a tensor from transactions, which is simple. Okay. So attendance link I am sharing now. Okay, so there's your attendance link. I don't know why my system is so.
think we're okay now. I think. Navigating around an app, by which I mean moving from one screen to another, is an absolutely fundamental part of Android development. Historically, you do this using intense or fragment transactions, which in simple cases, like clicking a button, was easy enough. But what if you wanted to do something just slightly more complex? For example, hooking up a common pattern like bottom navigation. You need to make sure that not only your bottom navigation view actually navigates, but also that it highlights the correct button. Oh, and also that it handles the backstack in a uniform way so that users don't end up getting lost or confused. Cases like this are where the new navigation component shines. The navigation component is a collection of libraries, of plugins, and tooling that simplifies Android navigation. Beyond making the setup for common patterns like bottom navigation easier, the component handles the backstack, fragment transactions, argument passing, navigation-based animations, and deep linking. Importantly, it gathers up all of this navigation information and puts it in one visualized location in your app, the navigation graph. The navigation component works out of the box with fragments and activities. You can also extend the library to work with other screen implementations, like your custom views. Let's look at some examples of the navigation components in action with a single activity, swapping out multiple fragments. If you're wondering why you might consider a single activity model, check out Ian Lake's excellent talk, which I've linked in the notes. Okay, so one way to think about the navigation component is that there are three major parts working together in harmony. These are the navigation graph, the nav host fragment, and the nav controller. The navigation graph is a new resource type. It's an XML file that contains and centralizes information related to navigation. Now, this information can be visualized in the new navigation editor that is available in Android Studio 3.3. It's a graphical editor to create this, well, navigation graph. Each of these screens are called destinations, or places that you can navigate to. In this example, they're all fragments. Now, these arrows here are called actions, and they represent the different paths that a user can take through your app. If you click on one of the actions, you can see a whole bunch of embedded information, including data passed between destinations, transition animations, backstack manipulation, and so on. Clicking on the destination, you can see things like deep link URLs and launch options. This is all part of the XML of the graph. Okay, so next we have the nav host fragment. This is a fragment widget that you'll add to your layout, assuming that you're doing fragment navigation. It's basically a window that swaps in and out different fragment destinations that are included in your navigation graph. The final piece of the puzzle is the nav controller. Each nav host fragment has a nav controller
that you'll use in your Kotlin or Java code. And this is what actually instructs the navigation to occur. So if I write some code like this, the nav controller will then perform this navigation action based off of all of that information that was in the navigation graph. And it will ultimately swap out which fragment is shown in the nav host fragment. Now here I'm using the action's XML ID to specify which of those action arrows to follow. But an even better way to do this is using the navigation component's safe_args plugin. The safe_args plugin generates code to allow you to do type-safe navigation and argument passing. First, you'll add the Gradle plugin to your code. This will generate classes based off of your navigation graph. It'll make these direction classes for any destination that has actions. It'll make args classes for any destination with arguments. If you take your original navigation statement, you can swap in these generated classes and you'll get something that looks like this. Instead of referring to an action by its XML ID, you're making sure that you have an action that's actually associated with your destination. You can also set arguments of the action. Pass in the wrong type, and the code won't compile. Getting the arguments you pass through is easy. Simply use the generated args class, and you have type-safe access to only the correctly named arguments. No need to worry about the key value pairs of yesteryear. So that was simple navigation. Let's talk about setting up that bottom nav. The navigation component includes an additional navigation UI library in Java and KTX extensions for Kotlin that have support for options menus, bottom navigation, navigation view, and navigation drawer. It also works with action bar, toolbar, and collapsing toolbar. For our bottom nav, you'd add the bottom nav to your XML as normal. You'd also create an XML menu with IDs that match the XML IDs of your destinations in your navigation graph that you want the bottom navigation to go to. Then you'd use navigation UI to wire up the rest. In Kotlin, that's done with this handy extension function. This one line of code has nav controller handle the actual navigation, making sure to follow the material design best practices as far as backstack management goes. On top of that, it handles highlighting the correct bottom buttons. Now, we have only explored a few parts of the navigation component. For a deeper trek into navigation, check out the code lab and the documentation, all linked below. Happy coding and happy navigating. Okay. So अभी तक हम कर रहे थे words app. If you remember, yesterday we did words app, and in that we were doing intents, activities and intents, right? We were using intents to navigate between two activities. Activities are very useful, but हो सकता है कि तुम जो ऐप पे करना चाह रहे हो, maybe it doesn't require you to go to a separate screen altogether, right? Maybe whatever you want to do can just changes your current screen, and और मे बी तुम्हारी स्क्रीन पे दो चीजें आ जाए या फिर और भी चीज हो सकती है इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग टू अनदर होल सेपरेट अदर स्क्रीन. We do that with something called fragments. Many apps don't need a separate activity for every screen. जैसे ये तुमको दिखेगा फोन कॉल है, यहाँ पे नीचे you can see favorites, recents, contacts. ऊपर there is a search contacts. तुम सर्च करोगे तो यहीं पे ऐप आ जाता, यहीं पे सर्च आ जाता है ना. You don't go to a separate screen. So एक सिंगल एक्टिविटी के अंदर हम बहुत सारी UI डाल सकते हैं such as tabs with something called fragments. फ्रैगमेंट क्या होता है? फ्रैगमेंट इज बेसिकली इट्स अ रीयूजेबल पीस ऑफ यूआई. मतलब इसको हम इसमें जो कंटेंट है इसे हटा के इसे बार बार रीयूज कर सकते हैं. एंड इट कैन बी एम्बेडेड इन वन और मोर एक्टिविटीज. सो later we'll come to what is, it's very similar to activity, so we'll come to what are the actual differences between a fragment and activity, how do you differentiate.
because fragment is reusable, it can be reused and embedded. इस अभी इस वाले में अगर हम किसी भी टैब पे आते हैं, जैसे फेवरेट्स है, फिर हम रिसेंट्स पे आते हैं, कॉन्टैक्ट्स पे आते हैं, तो कोई नेक्स्ट स्क्रीन नहीं आती, उसी स्क्रीन में कंटेंट चेंज हो जाता है, राइट? तो दिस इज हैपनिंग विद फ्रैगमेंट्स। इसमें हम किसी और एक्टिविटी को लॉन्च नहीं कर रहे हैं, हम फ्रैगमेंट्स का यूज कर रहे हैं, हम उस पीस ऑफ यूआई को जो हमारी स्क्रीन पे है, उसे रीयूज कर रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है कि एक बड़ी स्क्रीन हो, से हमारे पास ये हमारी लैपटॉप स्क्रीन है, एंड देन यू हैव स्मॉल स्क्रीन फोन। तुम अपनी फोन पे कॉन्टैक्ट्स खोलने की कोशिश करो, अपने लैपटॉप पे ट्राई टू ओपन योर कॉन्टैक्ट्स। ओके, सो ये लेआउट मेरे फोन के लेआउट से बहुत डिफरेंट है, राइट? मेरे my phone is much more like this, ऐसे नीचे नीचे आते हैं, and then you have these 4 tabs right there. यहाँ पे it's यहाँ पे the tabs are here, there are different tabs here, and the layout is different, right? तो ऐसे भी हो सकता है कि हम एक स्क्रीन पे मल्टीपल फ्रैगमेंट्स डाल दें। फोन पे the multiple fragments are there is this whole thing, this card जिस पे हम contacts लिखे हुए हैं, then this is the separate fragment जिसमें सारे tabs हैं। सेम थिंग यहाँ पे वो टैब्स ऐसे आ गए, सो दिस इज वन पीस ऑफ फ्रैगमेंट, एंड देन दिस होल, ये पूरा इज वन पीस ऑफ फ्रैगमेंट। सो दिस इज another fragment, this is another fragment. um, so see both the UI on the left, both this UI on the left, sorry, UI on the left and the content on the right can be contained in separate fragments, and both fragments can exist within the same, ये एक ही activity है, ये भी, this whole thing is just one activity, इसमें different different fragments हैं. So fragments are very important and very easy to use, and they are a better alternative to activities. So for starting, हम tree वाला ऐप ही words वाला ऐप ही ले रहे हैं, but पहले हम उस ऐप के I'll show you कहाँ गए थे हम। पहले जब हमने GitHub से डाउनलोड किया था, अगर तुम ये गलती मत करना कि you think कि सेम है, तो हम सेम नहीं डाउनलोड करें। पहले हमने वर्ड्स ऐप स्टार्टर भी करा, सो वर्ड्स ऐप एंड देन ब्रांच करके स्टार्टर से डाउनलोड किया था। अभी हम वर्ड्स ऐप के एक्टिविटीज से डाउनलोड कर रहे हैं कोड। सो मेक श्योर यू डू डाउनलोड, ये वो मत करना कि पहले से वर्ड्स ऐप है तो हमने इंस्टॉल कर रहे हैं। दिस इज अ डिफरेंट थिंग, सेम ऐप बट अ डिफरेंट ब्रांच, तो दिस इज जस्ट इम्पोर्टिंग। जैसे कि एक्टिविटीज होते हैं, एक्टिविटीज में लाइफ साइकिल होते हैं, वैसे ही फ्रैगमेंट्स के भी लाइफ साइकिल होते हैं, ओके? एंड वो भी यूजर इनपुट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जैसे एक्टिविटीज करते हैं। फ्रैगमेंट जो है वो हमेशा व्यू हायरार्की के अंदर आती है, सिंस इट्स आल्सो अ टाइप ऑफ, इसके अंदर जो कंटेंट है इट्स आल्सो व्यू टाइप, राइट? तो ये व्यूज की हायरार्की के अंदर आती हैं इनसाइड एन एक्टिविटी, जब व्हेनेवर इट्स शोन ऑन स्क्रीन. It's possible for multiple fragments to be hosted simultaneously by a single activity, and each fragment has its own separate life cycle. मतलब इस पूरे कोड में, इस पूरी स्क्रीन पे इट्स अ सिंगल एक्टिविटी से, मान लो कि ये कॉन्टैक्ट्स वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट एक फ्रैगमेंट है, ये पूरा पार्ट एक फ्रैगमेंट है। इस फ्रैगमेंट का अपना लाइफ साइकिल है और इस फ्रैगमेंट का अपना लाइफ साइकिल है, एंड देन इस पूरे एक्टिविटी का एक अपना लाइफ साइकिल है, ओके? इस फ्रैगमेंट के लाइफ साइकिल में जो भी हो रहा है इज नॉट कनेक्टेड टू इस फ्रैगमेंट के लाइफ साइकिल में जो भी हो रहा है। डजंट मीन कि यहाँ पे ऑन क्रिएट है, यहाँ स्टार्ट है सपोज, तो यहाँ पे भी सेम चीज चल रही हो। नो, एवरी फ्रैगमेंट हैज इट्स ओन लाइफ साइकिल. The fragments can be initialized and removed from the memory, जैसे कि on create, on start, on resume, on pause, यहाँ पे भी हो सकते हैं. They can exist, they can appear, they can disappear, and then they can reappear. So fragment की 5 states होती है, जैसे पीछे states थी, यहाँ पे 5 states होती है: initialized, created, started, resumed, and destroyed. That's it. So initialize क्या है? जब हम किसी भी fragment का नया instance create होता है, then that's instantiate होता है, that's initialized. जब फ्रैगमेंट साइकिल, फ्रैगमेंट के फर्स्ट लाइफ साइकिल मेथड्स कॉल होते हैं, देन इट्स क्रिएटेड, एंड इस
इस उसमें जो भी व्यू है उस फ्रैगमेंट के अंदर, जैसे कि ये फ्रैगमेंट है, इसके अंदर ये बटन है, ये टेक्स्ट है, तो व्यूज आर आल्सो क्रिएटेड विद इन दिस created, then started. The fragment is now visible on screen but it does not have focus. माने इस पूरे उसमें अभी ये स्क्रीन पे विजिबल, ये फ्रैगमेंट स्क्रीन पे विजिबल हो गया, जब तक मैं यहाँ नहीं आई थी ये इस पे फोकस नहीं था। यू सी अभी एसी रिपेयर पे फोकस नहीं है, इट्स जस्ट विजिबल ऑन द स्क्रीन, नाउ इट हैज फोकस एंड ऊपर वाले पे फोकस चला गया। सो समथिंग लाइक दैट, the fragment is visible on screen but, and अभी जब मैं इसके साथ जो भी कर रही हूँ, this fragment is visible on my screen but it didn't have my focus, now it has my focus. So meaning it can't respond to the user input. तो जब मैं यहाँ हूँ तो कहाँ से respond करेगा, तो मैं गई नहीं। Resume, the fragment is now visible and it also has focus. Destroyed, the fragment has been deinitialized and deinstantiated. जैसे कि एक्टिविटीज में बहुत सारे मेथड्स थे, फ्रैगमेंट में भी बहुत सारे कॉल बैक मेथड्स हैं टू रिस्पॉन्ड टू द लाइफ साइकिल इवेंट्स। देयर इज ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट जब हमारा फ्रैगमेंट इंस्टेंशिएट हो चुका है एंड इट इज इन द क्रिएटेड स्टेट, लेकिन इस ऑन क्रिएट में करेंटली लाइक आई सेड कि क्रिएट स्टेट में दो चीजें क्रिएट हो रही है, फ्रैगमेंट भी क्रिएट हो रहा है एंड उसके अंदर का व्यू भी क्रिएट हो रहा है। सो इसको हम दो लाइफ साइकिल मेथड्स में कर सकते हैं। वन इज ऑन क्रिएट, अब मेरा फ्रैगमेंट इंस्टेंशिएट हो गया है लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी व्यू है उसके अंदर जो भी व्यू डलने हैं अभी वो क्रिएट नहीं हुए। ऑन क्रिएट व्यू, इस मेथड में हम लेआउट को इन्फ्लेट करते हैं एंड देन the fragment, जो fragment है, it is now entered the created state. Is basically for inflating the layout. Then there's on view created. This is called after the view is created. So इसके और इसके बीच में व्यू क्रिएट हो रहा है, इन दो मेथड्स के बीच के टाइम में व्यू क्रिएट हो रहा है। On view creator, basically we bind specific views to properties by using something we've read this find view by ID. ठीक है, और we can just instead of doing find view by ID, अगर बहुत सारे एक fragment में बहुत सारे views हैं, you can just do view binding. Then on start, the fragment has entered the start state. On resume, it has entered the resume state and now it has focus. You can respond to the user input. On pause में it's visible but it does not have focus, so it's still in the started state. Screen से तो नहीं हटा है, it's still in started state but does not, it's visible to the user, it does not have focus. On pause, on stop, it has re-entered the created state. अब वो started से हट गया है, means ये instance बना हुआ है। ऐसा नहीं कि on stop पे मेरा destroy नहीं हुआ है, right? On stop पे मेरा object exist करता है, it's just no longer visible on my screen, तो वापस created state में घुस गया। On destroy view, it's called right before the fragment enters the destroyed, मतलब पहले जैसे पहले fragment create हुआ then view create हुआ, right? पहले view destroy होगा फिर fragment view destroy होगा। So it's called before the fragment enters destroyed state, the view has already been removed from the memory but the fragment object still exists. इस point पे सिर्फ मेरा view हटाए, अभी object fragment का object exist करता है। On destroy से the fragment enters the destroyed state. Now the fragment does not exist in the memory. So created में आते on create view, on view created, then they started, on start, resume, start, again on pause पे वापस start में घुस जाता है, on stop and on destroy view में वापस created में घुस जाता है, on destroy में it's destroy. So life cycle states and even callback methods are very similar to those of activities, right, for fragments, but there are differences. Now with activities we could use on create method, ये वाला जो on create था, to inflate the layout and could use it to bind views, right? लेकिन fragment life cycle में वैसे नहीं कर सकते। इसके लिए we need an on create view, not an on create. And then after the view has been created, we have an on view created where we can bind specific properties to specific views. यहाँ पे सिर्फ एक on create से मैं menu भी inflate कर सकती थी, मतलब method layout भी inflate कर सकती थी, and then I could also bind views. Here it's different. You have on create views to inflate the layout, and then on view created
to bind the views created to the specific views. Okay, so जैसे activity में बताया very similarly, your fragment will consist of two files. एक XML file होगी for layout and then एक coordinate class होगी to display the data and handle user interaction. Activity में भी यही था. You would have an activity underscore XML and then you would have a main activity, right? You have a class and then you have an XML file for the UI for the XML and for the layout and then a class for the data. Same way for a fragment. How do you create a fragment? Um, Android Studio is not open. I don't know why. I probably need to restart my system. But in that case, मेरा stream बंद हो जाएगा. Okay, so मैं ऐसे बता देती हूँ. Very sorry, but आज I guess Android पे नहीं दिखा पाऊंगी. Oh wait, खुल गया. Right? खुल गया. Sorry. Okay, just forget it. Can't work on it today. Okay, no problem. हमें क्या करना है? Project Navigator में you have to open your app. यहाँ पे हमें ऐप खुला हुआ है, राइट? इस ऐप में जाके you go to file, यहाँ पे राइट क्लिक करके you have to go to file, new fragment blank. ये हमने पहले हमने resource files भी डाली हुई है. So it's not something new. Just have to add this file new fragment and you have to choose a blank fragment. तो इस केस में क्लास और लेआउट फाइल दोनों खुद से जनरेट रहेंगी. देन कुछ ऐसा दिखेगा ये. और इसमें दो we need to set two fragments now. Set the first one first
Then second one, first fragment का नाम तुम्हें रखना है letter list fragment, and उसको layout का नाम है, you can just go and rename it by right click again, fragment letter list. ठीक है, same way for the second one, word list and fragment word list. So अगर तुम खोलोगे तो बहुत सारा कोड दिखेगा, which is automatically generated. We don't need all that. तो सारा हटा देना except for package name, import statement and class का name. बाकी सारा हटा देना. This should remain in both of them. Then I try opening. What can? Okay, so coding. सारा कोड करके दिखाना है, so I'm stuck. Okay, so मेरे इसमें यहाँ पे taking code from main activity into this first one, and then taking code from I think detail activity in the second one. Okay, ये दोनों हम Android Studio में wait कर लेते हैं. I will tell you something about Jetpack तब तक while we're waiting. Okay, so Android Jetpack. Now there is a video on YouTube that I liked for Jetpack, Android Jetpack. So I will send the link in today's message. In case तुम्हें आज नहीं समझ आता है, and maybe मैं आ जाता है, just want to view it better a second time, so you can see that video. So Android Jetpack क्या करता है? It provides you the navigation component ताकि कोई भी navigation app bar में कोई भी implementation हो, it helps you incorporate that in your app. इसके 3 key parts होते हैं, ठीक है, जो हम ऐप इसमें वर्ड्स ऐप में भी यूज करेंगे. Navigation graph, nav host and an app controller. Navigation graph, बस navigation graph तुमने वीडियो में देखा होगा, नीचे नीचे नहीं है, आगे आएगा. It's like it's an XML file, जैसे कि अभी you can see those XML files, right? You've seen जो कि हमारे कोड को when you split it, there's half sides the code and half sides the blueprint and the design. So same way, navigation graph is like an XML file. Instead of just having a blueprint and a design, उस पूरे से visual layout में you see different screens, and then there are different arrows on how to get to those screens. Okay,
So it's like a visual representation of navigation in your app. So from which screen or which fragment are you navigating to which screen or which fragment or which activity, ये सारा हम एक ग्राफ के थ्रू बना सकते हैं, like this to this to this to this, या फिर यहाँ से यहाँ भी जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये हम एक ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं. So वो वाला काम करता है navigation graph, which it presents in this XML file. And this file has destinations which correspond to individual activities and fragments as well as actions between them. So basically इसमें you have destinations which means कि एक activity से तुम्हें किस activity पे जाना है, किस destination पे जाना है, वो बताता है ये. And it's not just activities, individual activities and fragments as well as actions between them. मतलब कि arrows भी हो सकते हैं बीच में. So it doesn't just give you screens, like it gives you different screens, different fragments, and it also gives you arrows between them. So it also tells you actions between them, which can be used in code to navigate from one destination to another. जैसे कि layout files, जैसे कि I said कि layout files में होता है, there is a visual editor, design and blueprint, and there is a code, right? Same way in this. Nav host. Okay, so nav host. So nav host is used to display destination from a navigation graph within an activity. माने कि within an activity, ये navigation graph का use कर रहा है to display कि एक activity से किस destination पे जाना है. So that's your nav host. अगर हम different fragments के बीच में navigate करते हैं, तो different fragments पे navigate करते हैं, तो हमारा destination जो nav host show कर रहा है, वो update होती जाती है वैसे वैसे. So we can use like a built-in thing that the code is providing us called nav host fragment. It's in the main activity. Then third thing is nav controller. Nav controller का जो object है, क्या करता है? It lets you control between the destinations that are displayed by the nav host. Okay. Nav host बार-बार update हो रहे हैं. From fragment to fragment as you go, nav host is updating, right? Nav controller का object, it lets you control that navigation between those destinations. जैसे जब हम इंटेंस पे साथ काम कर रहे थे, we were navigating to a new screen, right, with every intent. So navigation component में nav controller के लिए हम यूज करते हैं navigate method. जैसे पहले हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के लिए इंटेंट यूज करते थे, we are using something called navigate to swap जो फ्रैगमेंट अभी डिस्प्ले हो रही है, to swap it जो फ्रैगमेंट हमें डेस्टिनेशन पे दिखानी है. It also helps you handle common tasks, जैसे कि सिस्टम का अप बटन मतलब तुम्हारे सिस्टम में नीचे तुम्हारे फोन में नीचे 3 बटन्स बने होंगे. There would be a home button, there would be back button, there would be a recent button. तो ये बैक वाला बटन को भी हैंडल करता है टू नेविगेट. जैसे कि अभी हमने ये तो देख लिया कि टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, राइट, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन, नेक्स्ट डेस्टिनेशन, बट उस स्क्रीन से वापस आना है. It also helps navigate back to the previously displayed fragment. Okay, all of this we have to save art plugin. ये कोड वाला ये चल जाएगा, फिर देखते हैं. Oh, sorry. Okay. ठीक है. सेफ आर्ट्स प्लगइन बता देती हूँ, देन वी गो बैक. सेफ आर्ट्स प्लगइन, जब हम वर्ड्स ऐप में इंटेंस पास करवा रहे थे दो एक्टिविटीज के बीच में, सेम एक्सप्रेसिव इंटेंट है, क्योंकि इफ यू रिमेंबर वर्ड सर्च से पहले वाली जो स्क्रीन थी, लाइक यू क्लिक ऑन लेटर एंड देन लिस्ट कम्स, वो एक्सप्रेसिव था क्योंकि तुम ये बता रहे हो कि इस ऐप से, इस स्क्रीन से मुझे उस स्क्रीन पे जाना है जहाँ पे मेरी लिस्ट ऑफ वर्ड्स. सो दैट्स एन एक्सप्रेसिव इंटेंट, यू एक्सप्रेसिवली स्पेसिफाइंग कि क्या करना है, कहाँ करना है. And to pass the data between these two activities हम use करते थे put extra method, right? इसमें हम selected letter pass करवाते थे. यहाँ पे we'll use safe args plugin. It's a data plugin, Gradle plugin, जो allow करता है type safety when passing data between types. Now what is type safety? Type safety is if you remember resource annotation जो मैंने करवाई थी कि जब तुम pass करवा रहे हो एक स्ट्रिंग और फिर एक इमेज, तो हम ये नहीं चाहते कि पहले इमेज पास हो जाए फिर स्ट्रिंग पास करे, राइट? टाइप सेफ्टी इज समथिंग सिमिलर टू दैट. I can show you here. I think it's my internet.
टाइप सेफ्ट क्या करता है? इट प्रिवेंट्स एरर्स, टाइप एरर्स, मतलब टाइप एरर्स इज type errors when you add a string to an integer. So there is no definition how to handle this case. तो integer देने था तुमने string दे दिया. That would be a type error. So ये ensure करता है type safety. This created a plugin called safe arguments, when passing data between fragments. ठीक है. Okay, let's get back to new. I want a fragment and I want a blank fragment. Okay, इसका नाम मुझे रखना है. Set the fragment name to letter list fragment. My fragment name is letter list fragment. And fragment layout का नाम है fragment letter. School this. वो like उसने खुद ही दे दिया हो. Kotlin main, yes, finish. दूसरे वाले का नाम मुझे रखना है. That is my mouse. Sorry. So दूसरे वाले का नाम है word list fragment. Then I have to remove the boilerplate code. We'll wait. Okay, ये हो रहा है तक. ये तो है jetpack navigation component. We covered this. Set the code part. We'll get back to the code part. Okay, using the navigation graph. It's better if I show you. Okay, got it. So there is a class, and then layout में you can see. Okay, still happening. Let's do it. Okay, so using the navigation graph. It's the visual editor is a navigation graph. यहाँ पे we'll work in the visual editor. Navigation graph क्या है? It's virtually mapping your app's navigation. मतलब जब तुम ऐप अपने फोन में किसी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा रहे हो, एक फ्रैगमेंट से किसी भी एक्शन कुछ भी कर रहे हो, that navigation is not ऐसे visible to you, right? तुमको बस ये दिखा रहे हैं कि you just see the next screen like a code, you just see the output, you don't see the code, right? तो ये virtually क्या कर रहा है? Instead of design and blueprint, यहाँ पे तुम्हारे पास एक पूरा ग्राफ है and it's showing you all the possible screens that you are going to, and then तो ये virtually map करके दिखा रहा है तुम्हारी phone की screen with along with the actions that are taking it there. Her screen or her fragment, it becomes a possible destination which you can navigate to. Nav graph is represented using XML file. Okay. Yeah, behind the scenes, it's actually creating a new instance of
ऑफ navgraph क्लास, हमारे पास, हम ये navgraph क्लास में नहीं जा रहे डिटेल में, हम जो पढ़ रहे हैं उसके बैकग्राउंड में it's actually creating a new instance for your navgraph. You're not seeing all of that part of the code. जो भी डेस्टिनेशन है जो नेविगेशन ग्राफ डिस्प्ले कर रहा है टू द यूजर आर कंटेन्ड इन नेविगेशन fragment container view. All we do is create an XML file and define all the possible destinations. ठीक है, and ये हम ये काम हम उस पे कर रहे हैं, the visual editor. जैसे हम विजुअल एडिटर पे काम करते जाते हैं वैसे वैसे उस तरफ कोड भी तो आता जाता है, right? There are two ways to write. Either you write the code and then you see the output in the layout XML file, or you write it, or you make changes to the blueprint or design, and then code gets added, right? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम XML फाइल हम बना चुके एंड वी विल डिफाइन ऑल द पॉसिबल डेस्टिनेशन जो एक ऐप मुझे लेके जा सकता है, और उससे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कोड है वो अपना जनरेट हो जाएगा टू नेविगेट बिटवीन फ्रैगमेंट्स एंड देन वी कैन यूज इट. Explain all this without. So in layout, can you see fragment letter list, right? मैं एक कर लेती हूँ फिर से time. I just I just want package. I want an import. ये मुझे नहीं चाहिए इतना सारा. I just want a class letter list fragment. Fragment, and then इसके अंदर का जितना भी कोड है, all of this. I don't need all of this. Okay, and it's here it says कि copy the contents of activity main, and दूसरे बारे में हम detail activity का डालेंगे. So, activity main. यहाँ पे we need this to go into तो ये frame layout हटा के I want my frame layout. It's done. ठीक है, ये जो दूसरा वाला है second one. Oh, also we need to update a tools context. हाँ, हाँ, तो यहाँ पे tools context से dot main activity, right? So यहाँ पे I need to change it to from dot main activity to letter first fragment. Letter list. I'm sorry. And then तुम्हें एक और ऐसी fragment बनानी है. I won't do it क्योंकि then hang हो जाएगा. So you have to do the same thing for fragment code list. The same process you have to repeat. तो जैसे ये ऐसा दिख रहा है, ये दूसरा वाला ऐसा दिखेगा. Then okay, let's implement letter list fragment. मैं बता रही हूँ, ये जो detail ये जो letter list fragment है ये main activity से उठा के इस class में change हो रही है. तो detail activity से word list fragment you will try to do on your own. Given इसमें code given है at the end, but try to do this on your own. मैं एक fragment का बता रही हूँ, दूसरा fragment similarly करना है. Okay, so जैसे कि activities में हम inflate करते थे layout and then हम individually views bind करते थे, यहाँ भी same चीज करनी पड़ेगी except a few differences.
Okay, तो view binding लगाने के लिए firstly we need a nullable reference to this fragment letter list binding. So fragment letter list binding question mark null safety and then हम इसको nullable reference कर रहे हैं. So we're setting it to null. ये जो property है ये view binding की it's already enabled under your build feature section of build creator file. We just need to assign this property in your fragment class. तो हम इसको assign कर रहे हैं हमारी fragment class में for each view. Type is fragment letter list binding. इसकी initial value है null. Why do we make it null? क्योंकि हम layout को तब तक inflate नहीं कर सकते जब तक on create method call on create view नहीं call होता तब तक हम layout को inflate नहीं कर सकते, right? So and there's a period of time, like I said, between on create view and then on view creates. There's also a period of time between when the instance of letter list fragment is created, but when this fragment is instantiated, when it begins with on create, and when this property is actually usable, right? There are a few callback methods in between. So इस पूरे उसके बीच में fragment के views जो हैं they can be created and destroyed several times throughout this life cycle. For that's why we need to reset the value in another. On destroy maybe we will reset the value. Firstly, ये हमने कर लिया है. We get a reference to fragment letter list binding. We applied null city, we initiated with null, and we named the reference underscore binding. So since it's null, every time you access a property of underscore binding, we need to include question mark. जैसे पहले की टैब में पाथवे में क्या था that how do you know which one which कहाँ पे null safety लगाए कहाँ पे ना लगाए, right? तो हम जैसे लिख रहे होते थे intent question mark dot extras, तो extras के नीचे आ गया from bundle question mark. तो यहाँ पे भी हमने बाइंडिंग को एक ऐसे उससे प्रॉपर्टी से जो एक ऐसी प्रॉपर्टी है फ्रॉम जो क्वेश्चन मार्क से जुड़ी हुई है, राइट? तो जब भी हम अंडरस्कोर बाइंडिंग बुलाएंगे वी नीड टू इंक्लूड अ क्वेश्चन मार्क फॉर नल सेफ्टी. However, there is this thing कि हर बार you don't need to put your whole code in question mark बहुत सारे question mark डालने. There's another alternative you can do is double exclamation mark. ये हम it's like you can access it like any other property. It's the same as question mark. So एक चीज है double exclamation mark में use it only at a few spaces. ऐसे नहीं कि तुम हर जगह exclamation लगाए जा रहे हो, क्योंकि ये तुम सिर्फ तभी यूज करते हो when you know that the value will not be null. Just like तुम्हें पता है कि underscore binding जो है यहाँ पे it will have a value, क्योंकि जैसे जो object fragment बना है, right? तो fragment बना है उसमें कुछ view होगा, so some view will be created, so you know that it will have a value after it is assigned in on create view. You know for sure it's not null, तो इसलिए हम यहाँ पे double exclamation लगा रहे हैं. वरना और किसी केस में go with question mark. Accessing a nullable value in this manner, मतलब कि तुमने सोचा कि ऐसे तुम हर जगह ये लगा रहे हो and वो null निकला, हमारा ऐप क्रैश हो सकता है. So don't use this unless and until you're sure कि इसको value मिलेगी ही मिलेगी, it will not be null. Now we create a new property called binding and इसको हम underscore binding double exclamation set कर रहे हैं to show कि this will definitely not be null, right? Get का मतलब है get only. यहाँ पे this get means get only, which means you can only get the value. और अगर एक बार इसको assign कर दिया which is underscore binding, then you cannot assign it to something else. So this val binding ये हम कहीं और assign नहीं कर सकते. Once it has been assigned here, because of this get. अब ऑप्शन मैंने दिखाने के लिए we need to override the on create method. Function on create था यहाँ पे. We need to put the set has options menu. ठीक है, which will pass in true because it does have options. So as I said कि in fragments में layout inflate होता है with on create view callback method. So let's implement that one. On create view, we're inflating an inflator, layout inflator. So we're inflating it here. Then we're setting the value of binding. So
यहाँ पे we are setting the value of binding, and then here we are returning the root view. Okay, so binding के नीचे we will create a property for recycle view. And then जो recycle view को जिससे हमने किया है, this recycle view, इसको हम लगा देते हैं on. We will call this, we'll set the value of this in on view creative, and हम call करते हैं choose layout. जैसे हम पीछे मेन एक्टिविटी में भी क्या था. हाँ, तो यहाँ पे हम वो नहीं कॉल करें find view by ID for each view, क्योंकि हम ऑलरेडी recycle view लगा रहे हैं, and recycle view ऑलरेडी क्लास कॉल करिए binding को. Binding क्या है? View binding. On destroy में we are overriding this a little here. We're setting binding property to null, ताकि जो हमारा view है it should exist no longer, and then the fragment will exist no longer. जब हम एक्टिविटी यूज करते हैं, एक्टिविटी क्लास में मेन्यू इन्फ्लेटर एक ग्लोबल प्रॉपर्टी होती है. फ्रैगमेंट में एक ग्लोबल प्रॉपर्टी नहीं है, एंड फ्रैगमेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी भी नहीं है. तो इंस्टेड मेन्यू इन्फ्लेटर को पास करवा रहे हैं हम इन ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू, क्योंकि इट्स नॉट अ ग्लोबल प्रॉपर्टी. In fact, it's not a property that fragment has, while activity has. Also, this on create options in particularly in fragments does not require a return statement. ये जो सारे कोड है, ये मेन एक्टिविटी से ही फंक्शंस उठा रहे हैं जो इसमें ऑलरेडी गिवन होगा. यहाँ से मेन एक्टिविटी उठा के हम लेटर लिस्ट में डाल रहे हैं. Move the remaining code, ठीक है, as is code copy करना है. The only difference to note is, unlike an activity, a fragment is not a context. Yes, activities में हम हर जगह this करके करते थे, right? हर चीज हम this करके पास करवा देते हैं, and we used context. Fragment is not a context. इसमें हम this नहीं डाल सकते as the layout manages context. However, हम context property use कर सकते हैं instead of this. So यहाँ पे yeah, this dot require context. So हम सिर्फ this और context this करे context नहीं pass करवा सकते. We need to have this dot require context, which means that it will return the context that this current fragment is associated with. We're just copying it from main activity. So now we need to inflate the layout ताकि fragment display हो जाए view में. So in on create, it's deleting everything except on create from main activity. So currently जो main activity है उसमें मैं सिर्फ इतना कोड रहने दूंगी on create में, and then बाकी जो सारे कोड है मैं already letter first fragment डाल चुकी हूँ. Letter list fragment. ये सारे steps are for doing the same thing for word list fragment, which you will do on your own. This whole thing, so पीछे यहाँ पे is given the steps. It's given the steps on how to do this whole same thing from detail activity into words list fragment. And in case पहले तुम खुद से figure out करने की कोशिश करना. In case you're not able to do it, or in case you get stuck somewhere, or you want to cross check, then you see this one. इसमें it's explaining how to do the same procedure for detail activity. Okay, here we did jetpack. यहाँ पे ये navigation dependencies डाल रहा है. Let's put that. Project level build Gradle scripts. Project level build Gradle क्या करना है?
फिर ये build script ext. We need to set the nav version to 2.3.1. Okay, यहाँ पे है ही नहीं. So put a nav version. हम navigation component use कर रहे हैं, so we need to put that. इस सब चीज़ का version है यहाँ पे. In the app level build gradle, here app level build gradle, we need to add for dependency group. यहाँ पे 2 dependencies हैं. We're going to add 2 more of nav version, fragment and UI. So this is class fragment.kt and UIKT is for XML file for fragment. So we did, I explained SafeArcs plugin. अब SafeArcs plugins install कैसे करना है? Let's go back to dependency, build script dependency. We are going to add this class path. Okay, sorry. यहाँ नहीं डालना था. Sorry. यहाँ पे you can see dependencies of build script. वहाँ पे डालना है. We need to put in this class path. Then in the app level within plugins, you need to add this one. यहाँ पे है plugins. Add one more. ठीक है. अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है. Gradle files is changed. So sync now. अब sync कर देगा. Explain navigation graph. Now, okay. तो जब हमने fragment container view बनाया था पीछे, अब इसे main activity में use भी तो करना पड़ेगा. So अभी जो मेरे layouts है, they are in fragment letter list and fragment word list. Activity main.xml में कुछ भी नहीं है. It no longer needs to contain the layout for the first screen. ठीक है. तो सारे layouts अब इसी में है. So activity main में first screen के layout की जरूरत नहीं है. Instead हम मेन एक्टिविटी में ये फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू डालेंगे जो ऑटोमेटिकली इन दोनों के लेआउट्स को एक्सेस कर लेगा. इट विल एक्ट एज अ nav होस्ट फॉर योर फ्रैगमेंट्स. फ्रॉम जो भी नेविगेशन हमारी ऐप में होगी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन इट विल टेक प्लेस इन फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू. तो replace all the contents of same layout in activity main. ओके. तो अभी क्या है मेरे पास एंड ये है ना एंड रिसाइकल विजेट रिसाइकल व्यू. इसकी जगह आई वांट दिस. ये सारा हटा के this is what I want in the frame layout. Let's add a name attribute. Okay, ID है. Let's add a name. हम एक स्पेसिफिक फ्रैगमेंट दे सकते हैं इस एट्रीब्यूट को. हम एक ओके. सो हम ये जो एट्रीब्यूट है nav host fragment इसमें हम एक स्पेसिफिक फ्रैगमेंट दे सकते हैं. बट सेटिंग इट टू द nav host fragment मीन्स कि तो हम अलाउ कर रहे हैं हमारे फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू को
navigate between different fragments, not just any specific fragments. Then layout width or height के नीचे I want to put this. Okay, इसमें हम एक attribute डाल रहे हैं default nav post, which means उसको हम true set करें, which means कि हम allow करें जो fragment container है मेरा तो interact with navigation की जो view hierarchy है उससे interact करने के लिए allow करें. For example, जैसे अगर back button press होता है तो कंटेनर को पता है कि पीछे वाली स्क्रीन पे जाना है, like your home screen. It's not related to your app, right? So it knows कि तुम्हारे home screen पे जाना है. Um, so it handles both new activity as well as the previous activity. Now we're adding an attribute called nav graph and we are setting it to nav graph. Okay. ये basically point कर रहा है to an XML file which will define how your app will contact with each other. Said कि nav graph क्या बताता है कि it's a visual representation mapping of how to go, where to go. तो ये basically उस तरफ point कर रहा है. हाँ, ओके. सो अभी हमने 2 एट्रीब्यूट ऐड करे नेम्स ऐप के, तो हमें ऐप वाली लाइन इंक्लूड करनी पड़ेगी जो पहले नहीं थी. यहाँ पे ऐप नहीं है, राइट? बट हमने ऐप के 2 यूज करे हैं नीचे, ऐप डिफॉल्ट एंड ऐप nav graph. So add that. Okay, now let's set up navigation graph. So sorry, in layout, I want a new sorry, 5 से करना था. File new. I want a layout resource file. Nav underscore graph dot xml. I want a nav underscore graph. And resource type navigation, directory name should automatically change. Resource type. No, it's not what I want. What? Directory name is navigation. That's okay. Okay. I think that messed it up again. Something else happened.
this something else. It's not what I want. I'm gonna don't do that mistake. Go to just मेरे file में आ नहीं रहा था. Hmm. Okay, just go to file new, create a new layout resource file, and then fill it with. Oh, okay. Well, actually, I think create this again. I'm not sure. Let's create this again. Hmm. Okay, let's. I'll just give you a. मुझे बस ये दिखाने की दिखता कैसा है नैव ग्राफ. Okay. Follow these steps exactly. Actually, I think I did correct क्योंकि folder called navigation will be created. तो ये बन गया मेरे पास navigation and nav graph. Still follow these steps. I think I messed up somewhere. Maybe I'm not sure. अगर ऐसे दिख रहा है then you're correct. Okay. You will see a visual editor. अभी click plus. हाँ, it's correct. Click plus to add a destination. ठीक है. See a visual editor. तो हम एक एक करके यहाँ पे it's making a destination for each fragment. Saying one for fragment letter list and one for fragment word list. So यहाँ से you can make a new one. New. So should have these destinations. Okay, I want one to fragment letter list. I want another. अच्छा ठीक है मेरे पास नहीं आ रहा है let word list क्योंकि I didn't make that fragment. So if you make that fragment यहाँ से add करके add for that too. ऐसे मैं अभी के लिए let me just add a placeholder. ठीक है for now to show you to how to work between two. ठीक है मैं इसे कहीं भी place कर सकती हूँ. It's completely up to me. It's just a placeholder. Instead, you should have a word list fragment. I'm just using to show you कि कैसे दोनों के बीच में काम करवाना है. Then see, it's not fixed. You can make this graph on your own. तुम कहीं भी अपनी screens place कर सकते हो. You can make this graph on your own. अब मुझे बताना है कि अगर मुझे बताना है इससे ये मेरी destination है. You see this arrow? Point this arrow to this. So you see? So now it knows कि यहाँ से यहाँ जाना है. We've created an navigation action here. ठीक है. And you click on this arrow. It's not letting me click. I don't know. My Android Studio is
if you click on the arrow, then you can side right side में, you can see the attributes pane जैसे यहाँ दिख रहा है, उसमें you will see कि इस action इस arrow का भी एक नाम होगा, and जो भी action जैसे यहाँ पे action letter list fragment to word list fragment, तो यहाँ पे बस आएगा letter list fragment to placeholder, ये रहा actually, हाँ ये idea आ गया ना, action letter list fragment to placeholder, इसको मैं reference कर सकती हूँ अपने code में, ठीक है. एक्टिविटीज में नेविगेट करने के लिए वी यूज्ड टू हैव एन इंटेंट, राइट, एंड इसमें हम एक्स्ट्रा स्पेसिफाई करते थे ताकि हम सिलेक्टेड लेटर को पास कर सकें. नेविगेशन भी सपोर्ट करता है पासिंग पैरामीटर्स इन डेस्टिनेशन, एंड इट डज इन टाइप सेफ वे, दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस द सेफ हार्ड्स प्लगइन, राइट. सो इसने क्या किया, इसने सेलेक्ट किया वर्ड लिस्ट फ्रेगमेंट डेस्टिनेशन, अभी मेरा प्लेस होल्डर है, एंड उसके एट्रीब्यूट्स में अंडर आर्ग्यूमेंट्स इस पे जाते हैं, से under arguments there's nothing to show, right? I can add one so I can add one, and हाँ अब यहाँ पे मैं कर सकती हूँ उसका नाम रख सकती हूँ, and I can keep it of type. I can say I want to type integer. इसने क्या किया, इसने लेटर किया है of the same, it wanted a letter of type string. Okay, तो जब भी ये चलेगा it will be ensured कि एक string is expected when this navigation action is performed. Okay, for this navigation action to perform, a string is expected. That's why we're using type safety. Okay, तो अब navgraph पे ये तो पता है, इसमें सारी destinations है, right? उससे ये समझ चलेगा कि कौन सी navigation, कौन सा destination सबसे पहले show करना है. How do you fix that? As the the star definition, add ABC. Okay. अच्छा, अब मुझे किसी भी एक स्क्रीन को आई वांट टू से कि ये मेरी स्क्रीन होम स्क्रीन है, दिस इज द फर्स्ट डेस्टिनेशन, द फर्स्ट स्क्रीन आई वांट टू डिस्प्ले, और इस स्क्रीन के आगे पीछे होते रहेंगे. सो इस click on screen you want, there's this home icon here, assign start destination, so this is automatically now my start destination. जब मेरा ऐप खुलेगा यही स्क्रीन दिखेगी. ओके, अब जो नेविगेशन एक्शन है, let's perform that. Just need 2 steps. Let's go to letter adapter. Letter adapter. यहाँ पे
Sorry for this, everybody. My internet just went. Okay, can somebody please tell me कि last कहाँ तक? Where was I audible? Um, okay, I was in navigation graph. Okay, so we were on data adapter. Okay, okay. So you were on data adapter. Okay, it's open. ये मुझे error से दे रहा है because my word list fragment is not made. Um. Also, after you're done with the nav graph, the whatever screens you put, whatever you've done with the nav graph, after that, go to build, rebuild project. From here, go to build, do a rebuild. What did I do? Added something. Go to build, sorry, and do a rebuild project. Okay. So whatever you did, whatever changes you made, uh, they'll be available to the system. Then, okay, let's see. Okay, we did that. We deleted the contents. Instead, we put this in. Okay, you didn't hear about the. All right. I opened my letter adapter here. Here I found this the set on click button on click listener. I removed the code and then I put in this code, just this line. So इसमें जो भी names है functions के, you don't need to worry about them because this is where your safe args come in. So first thing कि जो भी type होगी, safe args will ensure कि type सही जाए and it ensures type safety. And then secondly, जो भी actions हमने navgraph से create किए हैं, it ensures कि they are turned into code that we can use. Now, the names जो है, they can be easier to read and easier to connect. Like letter list fragment directions. What does it tell you? कि letter list fragment से जितनी भी directions में जितनी भी destinations पे जा रहे हैं, you are trying to access that. So it lets you refer to all possible navigation paths starting from letter list fragments. जैसे कि ये हो गया action letter list fragment to word list fragment, which means कि ये एक action है which is taking me from letter list fragment to word list fragment. It's a specific action to navigate to word list fragment from letter list fragment. Um, then we just need to, oh, then we just need to pass a reference to our nav controller. ठीक है, nav controller क्या है? It lets you perform navigation actions. And जैसे हम intent pass करवा रहे थे in activities, we're passing in we call navigate to pass in the action. So we hold a view, find nav controller, and then we're passing navigate, we're calling the navigate and passing in action.
this code is to be added here. Then, so okay, हर चीज हो चुकी है except for let's go back to main activity. In this main activity, we need to make a few changes. जो भी जो nav so first we create a nav controller property. It marks the late in it क्योंकि हम इसे नीचे और क्रिएट में यूज करेंगे मतलब इन सेंस कि हम इसे नीचे इनिशियलाइज करेंगे सो लेट इनिशियलाइजेशन इट्स अ प्राइवेट कीवर्ड प्राइवेट लेट इन इट that nav controller. So we're creating a nav controller property which will be set in on create. Then after the call to set content view, so यहाँ पे set content view. इससे पहले ही मेन एक्टिविटी में चेंजेस हो चुके हैं आई थिंक मेरा तब एनुअल स्टूडियो चल नहीं रहा था सो आई डिडंट मेक इट हियर लाइक दिस recycle view is not needed anymore. Oh, and also I need to rebuild the code. उससे भी ये चीजें चली जाएंगी. Okay, so set content view के बाद in on create we need to get a reference to nav host fragment. जो मेरा frag container view था ये उसकी ID है nav host fragment and we are assigning it to this nav controller property we made. So val nav host fragment. You don't need to worry about this. Find fragment by ID. So find view by ID होता था. Find fragment by ID. r.id which is nav host fragment as nav host fragment and then we are assigning it जो भी value मुझे यहाँ मिली we are assigning it to this nav controller. Then in on create we're also calling setup action bar. So setup action bar with nav controller क्या है कि it ensures कि जैसे हमारे फोन में नीचे दिखता है a bag home screen and all that. So it ensures कि action bar या कि app bar के buttons भी available हो जैसे कि menu option के available menu options visible है वैसे app bar के buttons भी visible हो. So that's what this is doing. Then finally we're implementing this on support navigate up. तो ये क्या करता है पहली बात तो जो हमने XML फाइल में डिफॉल्ट nav host को ट्रू किया था it helps in setting that. And then secondly it allows you to handle the up button the back button we did. So इसकी implementation में we need to provide some implementation. So we're either returning nav controller dot navigate up or we can call the super constructor on this, the super on support navigate up. So इस point पे all of them are working, but there's one problem which is word list fragment पे we're still passing intent. So intent extra for this letter that the user clicks. That won't work anymore, right? क्योंकि now we are using fragments, there are no intents. So word list fragment में update करना पड़ेगा. पहले हम activity dot intent से करते थे ना we used to do activity dot intent in all the activities. तो अभी जब तुम word list fragment बनाओगे in that also you'll see कि you will use activity dot intent to access this letter. So this would work but it's not a best practice क्योंकि ये जो fragment है ये किसी एक layout में embedded हो जरूरी नहीं है. This fragments can be embedded like in like other layouts. And जैसे अगर ये तो बहुत छोटा ऐप है जैसे बहुत बड़ा ऐप होगा it's much harder to assume कि it's not harder to find out or assume कि कौन सी एक्टिविटी से कौन सा फ्रैगमेंट बिलोंग करता है right it would be a very tiresome task. So other than that the navigation it's performed by nav graph right and safe arguments are used. There is no intent. Trying to access something like intent extra is not going to work. Okay, so safe arguments is pretty you don't need to wait until on view created is called right. So on view created कॉल करने की जरूरत नहीं है to access arguments. So in this word list fragment we will create a letter id property. We will create a letter id property
So, and it doesn't have to be nullable, so we're making it a late in it, so it's not a nullable thing. Late initialization hoga, it's private, val letter ID of type string. Then we'll override the onCreate method, um, and then we'll add this arguments are they null, let letter ID equal to it dot get string letter dot to string. ठीक है, it's possible कि जो arguments है they are optional. So ये क्या करता है, it we're calling a let and we're passing in the lambda. You guys remember lambda? ये जो है it's a lambda function. And it's passing in a let. So let would be a higher order function. ये क्या करे, it will execute assuming that the arguments are not null and जो भी non null arguments है they're passed with using the if parameter. ठीक है, और अगर argument null है तो ये lambda function execute ही नहीं होगा. So arguments null, if null it stops right here, if not null it goes, it accesses and executes this lambda function. हाँ, so ये एक छोटा सा तुम्हें अपने आप ग्रे में आ जाएगा, तुम ये लिखोगे ये अपने आप अंडरस्टूड दिखा देगा इट बंडल. तो ये तुम्हें अवेयर करवा रहे हैं कि ऑफ इट पैरामीटर. ठीक है. Yeah, so what is bundle in this? इसमें bundle क्या है? It's a key value pair which we used to pass the data between different classes, जैसे कि activities and fragments, right? ये सारी activities fragments classes के अंदर आ रही है. इन सबको pass करवाने के लिए we're using bundle. Now we've already used this bundle पहले in intent, extras, get string, right? जब हम इस ऐप का पहले वाला वर्जन बना रहे थे तो फ्रैगमेंट्स के साथ it works exactly the same. Finally, we are accessing the letter ID when we set the recycle views adapter. So recycle view the adapter view, recycle view dot adapter, and then the word adapter letter ID, and we're passing in required context. We can't pass context; it's a fragment, so required context. So अब ये पूरा चल जाएगा, and it will be two screens. There will be no intents, and it's all a single activity. Lastly, it is just updating the fragment labels. अभी जब तुम कोड चलाओगे तो पहले जब तुम कोड चला रहे थे so it would be you would click on the letter and then it would यहाँ पे आता था words starting with A. अब सिर्फ words आ रहे हैं, right? तो हम अपडेट करें ताकि word starting with and the letter the person clicks. That's what we do. Fragment एक प्रॉपर्टी होती है लेबल की, जिसमें हम टाइटल सेट कर सकते हैं ताकि पेरेंट एक्टिविटी को पता चल जाए कि किसे ऐप बार में यूज करना है. So strings में जाके here in your strings यहाँ पे बहुत सारे strings बने हुए हैं. Another one, add another one, word list fragment table, words that start with and pass in letter. ठीक है. So we can also set the label for each fragment using on the navigation graph. On the navigation graph, so go to navgraph.xml यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे select this letter list argument. ये है मेरे पास selected. Set the label here. इस label में डाल देते हैं app underscore name. App underscore name. So at ये अपना it's at the rate string slash app underscore name. Word list में भी you have to do the same thing. Go to address string word underscore list underscore fragment underscore label. Okay, that's it. You can get the solution code from here. This one test navigation components. जैसे मैं हर बार जो टेस्टिंग वाली होती है टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट वो मैं तुम लोग खुद करने के लिए देती हूँ. I will just quickly run through this one क्योंकि fragments है so it's a little bit different. I will quickly run through this one and
दिस वीडियो इज ऑप्शनल, तो जब तुम खुद से कवर करोगे, सिंस हमारे पास टाइम आज खत्म हो रहा है, तो जब तुम खुद से करोगे तब तुम ये वीडियो देख सकते हो. इट्स ऑप्शनल, यू कैन आल्सो स्किप इट, and with the quiz we'll just finish today. Okay. By now you know how to create an instrumentation test class. तुमने पुराने वाले करे हैं. You add the necessary dependency. I showed you where to add dependency. It's also telling you go to your app modules, build creator files. You can add these dependencies. Now writing the navigation component test. It differs a little bit from what you do in regular navigation test. जब हम regular navigation test करते हैं तो हम trigger करते हैं navigation to execute on a device on emulator, right? जब हम navigation components को test कर रहे हैं तो हम actually device और emulator पे नहीं कर सकते because it will just skip through screens. It won't actually show me what I need to check. तो इंस्टेड हम फोर्स कर रहे हैं कि नेविगेशन कंट्रोलर को टू नेविगेट विदाउट एक्चुअली चेंजिंग व्हाट इज सीन ऑन योर फोन और डिवाइस. ठीक है, एंड just give me what I need to know without changing your actual screen, on your emulator or your physical device. And you just need to make sure कि हमारा navigation controller correct destination पे arrive हुआ है. Maybe it arrived directly, maybe it arrived from 2-3 screens, right? ये हमें check करना है. तो हम इसने एक function बनाया navigate towards nav component. Then it created a test instance of the navigation controller. Okay, तो इसमें यही था. You should read. ये तो तुम खुद से करोगे, then you'll read all of this. It doesn't have much, and it's not too much theory for me to explain. इसमें main चीज बस यही थी that it's a little bit different from your regular instrumentation test क्योंकि उसमें you are actually seeing on the screen. Here you're forcing it कि screen ना change हो and मुझे मेरा output दिख जाए on your Android Studio. Yes, another thing here is before and after. Say हमारा instrumentation test and unit test have a feature जो कि they let us set up the same configuration for every test class without repeating code. तो देखो अगर तुम्हारे fragment में 10 बटन है जो कि यहाँ पे हमारे पास 26 buttons है, right? 26 letters. हर बटन एक यूनिक फ्रैगमेंट पे क्लिक लीड कर रहा है व्हेन क्लिक्ड, राइट? अगर हम टेस्ट पैटर्न जो पीछे दिया हुआ, इफ यू ऑब्जर्व दैट, तो हम बार बार कोड रिपीट करेंगे फॉर एवरी बटन. तो ऐसे तो हमारे पास 26 टेस्ट बन जाएंगे. That's not useful because 26 times you're just repeating the code. That takes a lot of memory space. It's useless. So instead of repeating a code 26 times, we can just save ourselves with something called @before annotation and there's another @after annotation. ये हम तब यूज करते हैं when we provide the code needed. मतलब बेसिकली हम एक कोड दे देते हैं and then we write @before. So basically providing a code which is needed to set up our test. Then we can name जो भी method हमें चाहिए, 26 methods you can name. But keep in mind that they're relevant to what code you're providing. ऐसे नहीं कुछ भी कर लो. इस set of lines से related जो भी तुम्हें methods call करना है, you can just name those methods instead of setting up the same fragment 26 times, the same code 26 times. So ये जो method है, now this will run for every test that we write in this class, ठीक है? And एक और चीज होती है similarly like before, there is an after. So there's a code that we need to execute after every test. उसके लिए हम use कर सकते हैं after annotation. Suppose we need to clean up a resource that we use for our test. It can also be used to clean up a resource after that we use for our test, and we can use it to return the device to a particular state. इसके लिए भी we can use after. ठीक है? So before class and after class notation. Main difference is कि the methods जो हैं ये the methods with this annotation execute only once. जितने methods तुम name करोगे they will execute only once. But ये जो executed code है ये हर method पे apply करेगा फिर भी. Writing that. Before class runs for the class,
Before runs before the functions, after runs after the functions, and after class runs for the class. Uh, so before and after every method, and before class runs before anything in the class runs, and after class runs once everything else in the class is run. Okay, let's do the quiz and finish this one. Then tomorrow, the rest two pathways of Unit 3, till the point I can cover. Okay. Okay. On-create view is called once for a fragment's entire life cycle. No. Which of the following is a benefit of using fragments? Navigation between fragments allows for a more sophisticated user interface patterns, such as tab bars. Yes. Using multiple fragments within an activity allows for an adaptive layout across multiple screen sizes. Yes. The same fragments can be reused across multiple activities. Yes, with all. In the fragment lifecycle, which of the following tasks should be performed on view created? So, binding your view object to properties, configuring the option menu, setting properties of individual views. I think these two would be crossed. In the fragment lifecycle, which of the following tasks should be performed in on create view? Hmm. Inflating the layout, fill in the blanks. I might be reversed about this. Let's check. Dash method needs to be overridden in the host activity to ensure your app's fragment-based navigation responds to the app's up button. Okay, we covered that. Given the code for navigating between two fragments in a note-taking app, a list of books and a list of notes, which of the following is true about the navigation graph? Book list fragment directions going in all the directions accessible from book list fragments. Action book list to notes list. Book index is equal to index. Holder view find nav controller dot navigate action. Okay. It's going which of the following is true about the navigation graph file. Okay. Both the books list and notes list are destination. No. The notes list is destination. The books list fragment has an argument called book index. There's an action defined in the navigation graph that goes from books list to the notes list. Yes. Okay, so we can. Okay, A, B, C are true. No. A. Okay. So C is definitely true. Both the book list and notes list. Okay, so I think A and C. C. And as for to this one, if anyone wants to provide the answers in the chat box, you can. I don't have time, so I'm not doing the 10-second thing. But
Hmm. I can just go back and cross check. See if these are true. How many of these are true? Hmm. Okay. So this is true. It's also correct. These two are also correct. I didn't confuse between on view created and on create view. This is correct. On create view is in creating the layout, and on view created is binding view objects. I'm not sure about the answer to this one. Yeah, so this book list fragment has an argument called book index. That's not true. That's not necessary, and this is not for argument. So it's just this one I'm not sure. And doesn't let me give again. You've passed the quiz. All right. I will give the answer in the message. I will confirm it and give the answer. And that's it for today's session. It was a very long one. So thank you for staying. Okay. All right. Bye bye.